Hi, I am Jamin. Today we are going to study business economics, and the very first unit is the scope and importance of business economics. So stay tuned, relax. I'm gonna teach you in a very simple and lucid manner. Okay? Yeah. As you all know, that economics helps us to understand how resources are produced, how resources are managed, right? And how coordination in the market happens, right? And we also know that economics is a tool that helps us to analyze, examine, investigate the economic problems in our society, right? There is always scarcity of resources. There is huge demand, right? There is overpopulation. So all these factors help us to understand the society from economic point of view, and that is why we study economics. Okay, so let's get back to the very basics and the foundation of economics. As you all know till date, that economics are of two types. The first is micro and the second is macro. Okay, so micro means chota, smaller units. Okay, so whenever we study society, we cannot study the economic realities of the society as it is. We require certain tools and approaches to study economics. So microeconomics helps us to understand the relation between a single buyer and a single market player, or maybe a market seller, right? Right now between you and me, this is one-to-one transaction, right? This is one-to-one information sharing exercise. So now this is micro lectureship. If I am addressing to a group of many people, that is macro, M-A-C-R-O, right? So now, why are we studying micro and macro? Because micro and macro help us to analyze what are the various functions, what are the seen and the unseen factors that determines the demand, that determines the supply, what are the factors that affect, the production, distribution and consumption activities. Okay, so whenever we study microeconomics, okay, we need to take few things into consideration. Okay, the first thing is that it is very foundational in nature, it is very basic and it is very straightforward. So in today's session, we are gonna decode and decipher that what are the various aspects. Okay, what is the significance of economics? What is the scope of economics? And what are the tools through which we can understand economics? Okay, so now let's tone down to the very basic. Okay, the question is, I want to ask you, is economics a science or an art? So science matlab, it's not I'm talking about natural science. Science yahan par is a social science. Why it is called economics or social science? Because economics is studied in the ambit of the society, right? It has nothing to do with physics, chemistry and biology. Okay, so when I am talking about social science, I am referring to economics, sociology, psychology, etc. etc. So it is a science. Why it is a science? Because science is always changing. Science is always evolving. So science never remains same. It has to change because we are very scientific by nature. We think logically, we think emotionally, and that's how our buying and selling decisions are also based. So when I'm talking about economics as a science, I'm referring to the scientific reasoning. I'm referring to the scientific angle behind our buying and selling decisions. And all of us are very scientific. Why? Because we think logically, we think emotionally, and we are also relying on our decisions on the basis of what we hear, what we see, and what is proven in the market. So that's how we understand as economics in a scientific angle. The second part is economics an art? So art आप लोगों को पता ही होगा कि क्या art economics एक कला है? Yes, because doing business is an art. Buying things, negotiating, bargaining, finding the best at the minimum price is also an art. So economics makes us a very scientific person. It makes us a very artistic person. You do not have to relate it to the media angle when I'm referring to the word art. Please be cautious here. So when I'm talking about economics as a science or as an art, I'm referring to from the philosophical angle. I'm referring to from the social angle. I'm referring to inquisitive angle. So that's how we have to understand economics and science here. Now the second important part is economics a positive science or a normative science?
Now positive signs मतलब ऐसा नहीं है कि no it is positive, it is negative. No, it has nothing to do with that. Okay, so when I'm talking about positive science, I am referring to science that is based on reality, the science that is based on facts, not on assumptions. That is called positive science. और उसका opposite क्या हो गया? Normative science. So positive बोलता है कि what it is या what is it. Normative science बताता है हमें कि what should be, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, because it has to do with norms, which is basically code of conduct. So when I'm talking about economics with reference to positive science and normative science, I am referring to how the judgments, the knowledge building exercises and our decisions are based. Clear? Okay. Now the very last, methodology. Now methodology हम लोग क्यों अपनाते हैं? Like तरीका, right? So अभी सब्जी काटने के लिए छुरी चाहिए, वैसे ही if we have to understand economics, we need to have a proper method in the place. So there are various methodologies that help us to gather facts, like survey के through, observation के through, experiment के through, experience के through. So this is the huge scope of economics. Okay, and when you study economics, इसका career scope क्या होगा? You can enter into banking industry, insurance industry. You can become an economist. You can become a commentator, journalist, analyst. You can become a policy maker. You can become an international analyst. So बहुत सारे scope है economics करके. You understand my point? So what would be the importance of this? Economics helps us to understand the economic problems in the society. Okay, economics helps us to understand the gap between demand and supply, helps us to understand the relation between cost and price, right? कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करता है. It helps us to discover various variables in the society. So this is how we understand economics, and this is how we have to examine the reality from the economic angle. Okay, so now ये एक इतना सा रह गया. अभी अगर आप देखा जाएगा सिलेबस में हम लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना हम लोग देखते हैं, बट मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. मेसो और मेटा इकोनॉमिक्स अभी लेटेस्ट है, ठीक है, वो आपको कोई नहीं बताएगा. सो माइक्रो और मैक्रो आपको तो आज तक पता ही होगा. तो मेसो और मेटा इकोनॉमिक्स क्या है? मेसो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड that there is not always a monetary relation between a buyer and a seller. There is also a relation with reference to culture, relations, religion, law. So there are many forces and factors that shapes the interaction between a buyer and a seller. Meta economics, META or MESO, okay, spelling का ध्यान रखना. So meta economics helps us to understand the total output of the economy, helps us to understand economics from the system point of view. कि इतना बड़ा है इकोनॉमी, इतनी बड़ी चीज है, तो उसको कैसे समझा जाए? बहुत डिफिकल्ट होता है ना. सो माइक्रो हमको छोटी बातें बताता है, आपके और मेरे बीच में या कोई भी रिलेशंस के बीच में, कहीं ना कहीं उसको भी यूज करते हैं, और ज्यादातर माइक्रो बिजनेस डिसीजंस में यूज करते हैं, आप समझे. और मैक्रो नेशनल लेवल की बात करता है. मेसो वो चीजों की बात करता है जो हमें नहीं पता. और मेटा इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी डिफरेंट एंगल, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द टोटलिटी ऑफ द इकोनॉमी. सो विद दिस I am summarizing the scope and the importance of economics. Okay. Now let's go to the other parts. Okay. So what are the basic tools that we use to understand the various economic factors, economic variables, that I have told you a few minutes back. Okay. So the very first say is opportunity cost. Opportunity आपको पता ही होगा, मतलब, right? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया कि कॉस्ट मतलब आप कुछ पैसा डालते हो, आप कुछ खर्च करने के लिए डालते हो, तो वो आपका कॉस्ट हो गया. आप कोई भी चीज इन्वेस्ट करने जाते हो या निवेश करते हो, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अभी हमको कुछ चीज चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी आप एज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको स्किल्स चाहिए, आपको अपग्रेड होना है ताकि आपका फ्यूचर बेटर रहे. इज़न्ट इट? नाउ वेरी सिंपल, आप चाहो तो पढ़ाई ना करके जॉब कर सकते हो, बट आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि आप जॉब के लिए रेडी हो जाओ. तो आपने इधर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग की है, आपने जॉब की अपॉर्चुनिटी लेट गो की है, और आपने अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई पे डाली है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके का शेड्यूलिंग होता है, जिस दैट वी यूज इट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड बी इमीडिएटली डन एंड व्हाट कैन बी डन लेटर. बहुत सिंपल है. आई होप इतना सिंपल तो आपको कहीं नहीं पढ़ा होगा.
सो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग, जहां पे हम कॉस्टिंग करते हैं अपॉर्चुनिटीज को लेकर। ओके, दिस इज इट। दूसरा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट? अभी हमको बहुत सारी चीजें दी गई है, राइट? तो हमको कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा मार्केट में जाकर, इजंट इट? सो कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट रहेगा? अभी समझो कि आपको एक बाइक खरीदनी है, ठीक है? तो बाइक का एक्चुअल प्राइस रहेगा, प्लस उसकी एक्सेसरीज रहेगी, जैसे कि हेलमेट रहेगा, आपको कुछ डेकोरेट करना रहेगा, या आपको पेट्रोल डीजल डालना रहेगा, इजंट इट? या आपको कुछ वहां पर कस्टमाइजेशन करना है, पेंट करवाना है, तो वो एक्सेसरीज होगी। बाइक तो आपने ले ली, बट आपकी एक्सेसरीज भी हो गई, तो इंक्रीमेंट हो गया, मतलब बढ़ गया। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट दैट इन्फ्लेट्स विद एवरी न्यू कॉस्ट। समझ में आया? हाँ, अभी इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे यहाँ पर एक चीज छोटी सी ध्यान देनी है। आप बोलोगे कि चलो मेरे पास बाइक है, एक्सेसरीज है, सब कुछ है, राइट? तो मेरा टिफिन बॉक्स भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हुआ कि नहीं? नहीं, दोनों का रिलेशन अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड विद व्हाट यू आर एंगेजिंग। सो राइट नाउ यू आर एंगेजिंग विद अ पार्ट that is only bike plus accessories. So plus is incremental cost. Tiffin box is another economic transaction which you cannot mix with both here. Clear? So itna simply we understand incremental cost. The next episode is using of marginal analysis when it comes to making business decisions. तो ये सब फैक्टर है ना, आप लिटरली भले सोचते ही होंगे जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, बट माने कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली this all factors are actually involved, something knowingly or unknowingly. So today let us understand what exactly is a marginal analysis of business decision making. So suppose कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है और अपने डिसीजंस को इफेक्टिवली बनाना है, तो यहाँ पर मार्जिनल एनालिसिस आता है। अब मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम सैचुरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो मैं बताता हूँ वो यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी मतलब हमारे यूजफुलनेस। आगे अगर आपको प्यास लगी है, इफ यू आर थर्स्टी एंड यू वांट मोर एंड मोर वाटर, सो स्टार्टिंग में आप बहुत सारा वाटर पीने वाले हो, राइट? यू गोना ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। फिर धीरे धीरे यू विल बी सैचुरेटेड एंड यू विल स्टॉप यूजिंग टू मच ऑफ वाटर कंजम्पशन। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिमिनिश हो गई है, इजंट इट? अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको सपोज करेले की सब्जी नहीं बनती है, अगर आपको भूख लगी है, राइट? तो आप क्या करोगे? आप उसके अपने असूलों या चॉइस के खिलाफ जाओगे और कहीं ना कहीं तो आपको खाना पड़ेगा, राइट? अगर आप कहीं और से ऑर्डर कर रहे हो बाहर से, तो वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है। इजी? क्लियर? तो अगर यही एग्जाम्पल सोच के अगर आप डेफिनेशन या ये कंसेप्ट्स पढ़ोगे, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। तो मार्जिनल एनालिसिस is coming from the marginal costing, okay, from marginal utilization. So what exactly is marginal analysis? Marginal analysis is the examination and benefits of certain activities. Okay, so marginal analysis यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी कॉस्ट है एडिशनल प्रोडक्शन का, एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, एक लेवल आएगा जिसके आगे कोई हरकत हो नहीं सकती है या हो सकती है, तो डिपेंड करता है आपके अदर दूसरे फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो वेरिएबल्स यहाँ क्या हो गया कि दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, ठीक है, और एक होता है चेंजिंग। ओके, सो फिक्स मतलब आपका जो बिजनेस जो कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप अगरबत्ती का बिजनेस कर रहे हो, राइट? तो कुछ कॉस्ट होंगे जो फिक्स है, लाइक लेबर कॉस्ट रहेंगे जो फिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऊपर रहते रहेंगे, राइट? रिसोर्स का कॉस्ट रहेगा, सो ये हो गया फिक्स्ड, ठीक है? और दूसरे होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। उसमें क्या होता है कि चेंजेस होते रहते हैं चीजें, राइट? कभी कोई रिस्क आ गया, कभी कोई अनसर्टेनिटी आ गई मार्केट में, तो इसको लेके चेंज होता है। इसलिए वी अप्लाई द टूल्स ऑफ मार्जिनल एनालिसिस while making business decisions. So what we do in this case is that companies use this to understand the benefits, to benefits should outweigh the cost, मतलब benefits ज्यादा मिलना चाहिए cost से। For example, अगर समझो कि company is increasing the volume of goods, मतलब आपको बहुत ज्यादा goods बनाना है, आपको बहुत ज्यादा goods produce करना है, तो वो marginal analysis को perform करेंगे। So what are they gonna do in this case is they gonna accommodate everything that is part in making of that particular good, ठीक है? So for example, अगर labor cost बढ़ गया है, that can help you to understand, okay, so this is something new to
your costing. So that's one part, right? Then it is also useful for helping people and business decide how to allocate resources, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना होता है और कॉस्ट गिराना होता है. That's why we study marginal analysis. So I hope कि आपको थोड़ी बहुत रफ idea आई है to understand all these factors. So please drop in your comments your doubts and let us know what you feel about it.